वो आ गए ना, उनको आने दो फिर उनका चला ना बोलते तो रुक जाएंगे वो। वो रुक जाएंगे ना। हाँ तुम बनाओ, फटाफट बनाओ। नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी अनिल राठोड, सागर बायोटेक प्रतिनिधी। आज आपण मालखेड या गावी आलेलो आहे आणि आजिमभाई या शेतकऱ्यांनी आपलं सागर बायोटेकचं विजय खरबूज लागलेलं आहे आणि हे विजय खरबूज त्यांना कसं वाटलं आणि काय रेट गेलं हे आपण त्यांच्याकडून ऐकून घेऊ। नमस्कार हो। नमस्कार किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है सागर सीड्स की, सबसे पहले मैं तो सर आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि तुमने ये वैरायटी का नाम विजय किस लिए रखे? विजय इसलिए रखा की फार्मर शेतकरीचाही विजय आणि खाणाऱ्याचा भी विजय आणि लावणाऱ्याचा भी विजय आणि घेणाऱ्याचा भी विजय। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वाकई में जैसा नाम है इसका विजय, वैसा इसका काम भी विजय है। जिस तरह से आज की पोजीशन तो ये है किसान भाइयों के लिए कि तरबूज के अंदर भी उतना उनको टनेज का एवरेज नहीं बैठ रहा है जो इस वैरायटी का बैठ रहा है। तो मैं सब किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि हमारे खेती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और हमारी हार्दिक परिस्थिति सुधरे, इसके लिए सागर सीड्स की विजय जैसे वैरायटी को अपनी खेती के अंदर लगाएं और अपने हार्दिक परिस्थिति को सुधारे। जय जवान और जय किसान। आणि हा जो विजयचा प्लॉट आहे हा रमजानसाठी इथून सरळ बेंगलोरला जाणार आहे आणि हा प्लॉट जो आहे हा 23 रुपयानं खरेदी केलेला आहे आणि हा प्लॉट आजिमभाई, गाव मालखेड, तालुका नेर, जिल्हा यवतमाळ येथून सरळ बेंगलोरला रवाना होणार आहे। धन्यवाद।